But again, you know, psychologically, बंदा आप जिंदगी भर कहता है कि यार ये चीज़ें कुछ नहीं कह सकते, आप कह रहे हैं स्टेज पर चढ़ के वो चीज़ें कहो. So that was a very difficult thing. I really had a tough time to say yes or no. पहले मैंने हाँ कर दिया, फिर 2 हफ्ते बाद I was like, no यार ये मेरे से नहीं हो सकता. I just cannot do that. Pakistani American Creative Show Season 3 Episode 1 with Imran Qamar. Imran साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Looking forward to a nice conversation. Oh my God. और इससे पहले जो 2 घंटे की conversation हुई है. अच्छा इसके बारे में बताना है? Selective piece. ठीक है. Selective pieces बताएंगे उसके अंदर से. अच्छा तो पहले तो इमरान ये बताइए कि आर्किटेक्चर आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशन है, प्रोफेशन है, और पिछले 3-4 साल से बकौल आपके कि किसी ने इतनी दाद आर्किटेक्चरल वर्क पे नहीं दी, लेकिन आपने जब से एक्टिंग में आप आए हैं, थिएटर में आप आए हैं, दैट्स ऑल पीपल टॉक अबाउट एंड दैट्स ऑल पीपल रिमेंबर. सो गुड फॉर द थिएट्रिक्स, I guess. So let's start the conversation from your early childhood, your upbringing, your journey, and how it came to where you are. Well, it's a long journey. 53 years old now. So I was born. He said it. Yeah. All right. No issues. I'm proud of it. So born in Pakistan, born in Lahore. Came to Saudi Arabia when I was 3. वहाँ से 84 से I came to the US. Spent a couple of years in England in the middle. तो जिप्सी की तरह आता रहा हूँ, और 84 से लेके अब तक देखें तो 39 years in the US. Wow. Alhamdulillah. So I was 13-14 when I came. लेकिन जो क्रिएटिव जर्नी आप कह रहे हैं, तो मेरे दादा सिविल इंजीनियर थे. वो अमेरिका आए थे 1948 में मास्टर्स करने. Then he went back. He was a hydraulics engineer. I used to call him a dam engineer because he made dams. My father is a civil engineer. लेकिन फिजिक्स और मैथ्स मेरी वो नहीं थी, तो फैमिली की लाज रखने के लिए the closest thing to engineering was architecture, कि फिर भी खूबसूरत तस्वीरें बना लो और जो है ना प्रोफेशन में रहो. तो I've been drawing since I was a kid, painting and this and that. I was very shy. तो जूनियर हाई स्कूल में मेरे फादर ने मुझे एक्टिंग क्लासेस में डाला कि मैं अपने शल से निकलूँ, कुछ अपने जो ना शाइनेस से निकलूँ. तो आई डिड अ फ्यू प्लेज. लास्ट प्ले आई डिड वाज 8th grade. उसके बाद कुछ एमसी की अपॉर्चुनिटीज़ थी हाई स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन मैं बैक स्टेज प्रोडक्शन उस तरह की चीज़ें कर रहा था. फिर 2 साल पहले जो है ये बारबाडियंस का जो शो आया, आई गॉट अ चांस टू एक्ट. And it was a lot of fun. It kind of brought it out. और उसके बाद अब मैं 3 plays कर चुका हूँ, एक टीवी पायलट कर चुका हूँ, और 3 और plays में कास्ट हुआ था, लेकिन I pulled out because of work commitments. और इंशाल्लाह there's another audition next week. So alhamdulillah. So तो जो था बर्बादियंस के बाद से आपकी बर्बादी शुरू हो गई. वो वैसी बर्बादियंस है. लेकिन जैसे हमने कहा कि उससे पहले किसी ने कोई घास ही डाली थी, करता क्या है. और लेकिन आई गेस जब आप सामने निकल के कुछ दूसरी तरीके से कुछ करें और लोगों के सामने करें, तो सडनली एवरीबॉडी थिंक्स कि आप कुछ कर रहे हैं. एज आई सेड आई हैव ऑलवेज बीन क्रिएटिव, लेकिन कभी किसी ने इस तरह से वो नहीं हुआ. लेकिन एंड आई हैव बीन पेंटिंग ऑल माय लाइफ. लेकिन एक वो फेजेस आते हैं ना ज़िंदगी में, तो ठीक है स्कूल की हद तक तो थे क्रिएटिव, फिर शादी हो गई, फिर फैमिली थी, तो वो सारा कुछ साइड पे हो जाता है, बंदा फिर रोज़ी कमाने शुरू हो जाता है. तो अबाउट 5-6 years ago माई डॉटर्स डिसाइडेड टू बाई मी अ पेंटिंग सेट. तो उनको पता था कि आई यूज्ड टू पेंट, तो वो पेंटिंग शुरू की. आई सोल्ड माई फर्स्ट पेंटिंग इन 2021. 2022 आई डिड माई फर्स्ट प्ले. तो इट्स बीन अ वेरी काइंड ऑफ creative or regenerative process last couple of years, and I'm really enjoying it. I think वो टाइम भी ऐसा आ गया कि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, तो now I have more time to do something different. तो अल्हम्दुलिल्लाह. Absolutely, yeah. जबरदस्त. तो अब आपको किसी को ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, किसी को पिक करने की जरूरत नहीं है, सब अपनी गाड़ी में खुद चला रहे हैं. तो अब आपकी जिंदगी गाड़ी चल चुकी है. Yes. जबरदस्त. तो फिर इमरान ये बताएं कि
थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल में यही बताया था कि आप थिएटर कंपनीज के अंदर काफ़ी इन्वॉल्व हो गए हैं, और उस पे तो हम एंड में आएंगे, लेकिन थोड़ा सा अपना क्रिएटिव जो प्रोसेस रहा, थिएटर में लाइनें याद करने में आसानी रही या कैरेक्टर में आने में आसानी रही, वो कैरेक्टर आसान थे या आपको वाकई मेहनत करनी पड़ी? व्हाट वाज दैट जर्नी? देखें, वो जो जब बारबाडियंस किया था तो किसी ने वो प्रेस में ये सवाल पूछा था कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस रोल? राइट। आफ्टर 53 years, 4 kids, 1 wife and all these relationships that you have, वो हर चीज़ एक किरदार होता है, राइट? पहले लोग कहते थे यार पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स वो चीज़ होती है कि लोगों को कन्विंस करना, और उसी तरह से एक्टिंग क्या चीज़ होती है? लोगों को मनाना। ठीक है, अगर आपने किसी रेस्टोरेंट में जाना है, आपने कहीं और जाना है, किसी और ने कहीं और जाना है, अगर आपने उसको कन्विंस कर लिया, आपने वो एक्ट करके अपना सेल कर दी। करियर वाइज आई हैव ऑलवेज बीन एन एंटरप्रेन्योर, आई हैव ऑलवेज स्टार्टेड माय ओन कंपनीज। तो उसमें प्रेजेंट करना आइडिया, किसी को सेल करना वो आइडिया, और किसी से वो सर्विसेज बिकवाना इज ऑलवेज बीन अ प्रोसेस ऑफ कन्विंसिंग एंड गेटिंग अक्रॉस व्हाट यू डू, राइट? तो आई थिंक एक्टिंग हर बंदा हर चीज़ में करता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप एक्टिंग करते हैं? एग्जैक्टली, आई मीन व्हेन यू लर्न योर स्किल्स ऑन योर जॉब। एब्सोल्युटली, आई मीन जिस तरह जब फॉर एग्जांपल हम लोग रियल एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं, अब आपने सिटी को कन्विंस करना है कि जी आपका प्रोजेक्ट सही है, तब सिटी काउंसिल के सामने जा रहे हैं, आप जो है वो भी एक्टिंग है, बिकॉज सच क्या है गलत क्या है, लेकिन आपने उसको कन्विंस करना है, आपने कहना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो सबसे अच्छा है। तो यू नो इट्स ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग। अब लाइनें प्रेजेंट करना और कोई एक कैरेक्टर लेके करना, मैं किसी से पूछा था, एक्चुअली वाज लिसनिंग टू अ कॉमेडी शो, तो वो एक्टर भी था और कमेडियन भी था, और उसने बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन बताई कि इफ यू आर अ कमेडियन यू आर योरसेल्फ, इफ यू आर एन एक्टर यू आर प्लेइंग समबडी एल्स, राइट? सो उसमें फिर ये होता है कि आपको वो कैरेक्टर को समझना है और वो कैसे करेगा या वो क्या करेगा। दैट वाज द डिफरेंस। And I think the more you can bring to the table, so the more vocabulary you have, the more people you've seen, the more people you can draw कि हाँ ये सिचुएशन में फलाने बंदे ने ऐसा किया था तो उसको जो है ना इस तरह से करके वो कर। बारबाडियंस में एक और एक बहुत अच्छी चीज़ ये थी कि it was a comedy, it was a serious comedy, and that was a lot of fun कि जो है उसको टाइमिंग करना, being a dad, हर एक ने वो सुना हुआ है ऐसा डैड जोक, बच्चे आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते कि आपने जो है ना कुछ फनी काम किया है, लेकिन जब आप स्टेज पे जाते हैं वही चीज़ों पे लोग हंसना शुरू कर देते हैं, तो दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग एंड देन इट्स यू नो इट फीड्स यू। तो आई थिंक जो भी मैंने रोल्स किए हैं उसमें हमेशा कॉमेडी हैज़ बीन काइंड ऑफ अ इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इट, इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, एंड आई थिंक एक दफ़ा कैरेक्टर समझ में आ जाए कि वो क्या कर रहा है तो लाइन है बी बिकम नेचुरल, राइट? आप हर वर्ड नहीं याद कर रहे, आप उसका जो वो है टॉपिक या मीनिंग समझ लें तो ठीक है 19-20 लाइन आ जाएगी। तो फिर उसमें से बताएं कि व्हाट हैज़ बीन द मोस्ट डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर यू, जिसमें मतलब है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा या बहुत कुछ सीखना पड़ा और फिर उसके बाद किया? एक रोल मुझे ऑफर हुआ था, आई एंडेड अप नॉट डूइंग इट, बट it was a very scary role. That was part of the reason I pulled out. ये जो है Fade to Black is a black festival where black authors write plays for African American history. तो उसमें एक play था about a judge, a racist judge from Atlanta. उसने पता नहीं कितने काले लोगों को जो है illegally या erroneously punish किया था। तो जब वो रिटायर होता है तो सबके जो है ना भूत आके उसको हॉन्ट करते हैं, ही डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक। तो उसमें वो ऐसे कुछ वर्ड्स थे, लैंग्वेजेस थी जो आप नॉर्मली नहीं कह सकते, तो किसी गोरे ने उसको वो रोल करने से मना कर दिया। तो दे अप्रोच मी कि यार यू आर द राइट एज एंड यू नो राइट दिस थिंग, तो आके वो कर लो। मेरा पहला ये था कि आई एम गोइंग टू बी इन अ रूम फुल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स, और मैं अगर वो कुछ वर्ड्स कहना शुरू कर दिया तो मुझे वहीं लटका देना है। So, anyway, they convinced me that they'll forgive you because you're also a person of color. It's a character. It's a character. But again, you know, psychologically, आप जिंदगी भर कहता है कि यार ये चीज़ें कुछ नहीं कह सकते, आप कह रहे हैं स्टेज पर चढ़ के वो चीज़ें कहो। So that was a very difficult thing. I really had a tough time to say yes or no.
पहले मैंने हाँ कर दिया, फिर 2 हफ्ते बाद I was like, no यार ये मेरे से नहीं हो सकता, I just cannot do that. So I think there are lines where you're willing to do something, and then there are certain things that you just like. No, it's a good segue into my next question. So most actors that I have interviewed, they have decided a certain boundary for themselves. What are the boundaries for Imran Qamar? I don't think there are any boundaries. I have lived my life without boundaries. I mean, you just said no to one of the... Yeah. Well, that was more of a scheduling issue. That became an excuse for me. But if I did not have that excuse... Creative excuse था कि scheduling issue था. लेकिन अगर वो ना होता, I think I probably would have done it and pushed the limit. तो इमरान, I think आप जब एक्टिंग में है तो रिस्क तो लेना पड़ता है, राइट? तो जो बाउंड्रीज आपने सेट की हैं उनकी वजह से क्या रिस्क आपको लेने पड़े? एक जो है ज़माने में दीपक चोपड़ा का एक जोक था कि 3 guys die and they go up to heaven. एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है और एक एंटरप्रेन्योर होता है. डॉक्टर को पूछते हैं यार व्हाट डू यू वांट ऑन योर टूमस्टोन? कहता है जी मैंने एड्स का सोल्यूशन बनाया, कैंसर का सोल्यूशन बनाया, मिलियंस लोगों को बचा लिया था. ठीक है. इंजीनियर को पूछते हैं कि तुमने क्या किया था? कहते मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई थी, सबसे लंबा ब्रिज बनाया था. कहते ठीक है जी आ जाओ. एंटरप्रेन्योर व्हाट डिड यू डू? कहता है स्टे किकिंग. तो एंटरप्रेन्योर जो मर के भी नहीं मरता और रिस्क जो है ना वो. So I don't think there's anything off the table. I think if you live within limits, you limit yourself. मेरी हमेशा से philosophy ये थी कि ठीक है religiously, culturally हमारी एक line होती है, लेकिन वो line को आप आखिर तक लेके जा सकते हैं कि कहाँ तक है, कहाँ तक. लेकिन अगर वो line आपने cross कर ली तो फिर आप गए, right? तो वो एक आपको अपना खुद एक moral dilemma, आपका moral bound होती है कि आप वहाँ से कहेंगे यार इससे आगे मैं नहीं जा सकता. लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट आई विल से कि ये ऐसा नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन लिविंग इंडिपेंडेंटली सिंस आई वाज 14 years old. I've seen a lot of things, done a lot of things, been exposed to a lot of things. तो अल्हम्दुलिल्लाह risk is not an issue. ज़बरदस्त. नहीं, it's very inspiring to know कि अभी तक इस वाले शो में कोई ऐसा नहीं आया जिसने कहा कि I'm going to push the limits of my own boundaries to the max. तो उसमें kudos to you and more power to you. So I think जो हम पहले भी इंटरव्यू शुरू होने से पहले भी जो हम बात कर रहे थे वो is the coming of age of... Sorry, can I stop you for a second? हाँ. Define creativity. Right. What is creativity? Absolutely. Creativity is getting out of your comfort zone and seeing how far you can go. How far you can. तो अगर आप रिस्क नहीं लोगे आप क्रिएटिव कैसे हो? Creative कैसे? You're playing it safe. Absolutely. So sorry, yeah. No, but it's all segueing into my next line of questions is कि you are in your 50s, early 50s, though you don't look like one, but you have gone through in sort of a defined path within our Pakistani American diaspora. You have checked marked all the things that you as a dad and a husband needs to do, as a son needs to do, as a brother needs to do. Is it easy for you कि आप अपने 50s में इसके अंदर आए हो versus you think if you were in your 30s? देखें वो हमारे अगेन कल्चरली एक होता है कि यार मैं बूढ़ा हो गई. जिस दिन बूढ़े हो गए उस दिन जंग लगना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. राइट. सो इट्स अ फिलॉसफी. अगर आप कहते हो कि आप हो गए वो बूढ़े और दैट्स इट, ठीक है दैट्स इट. अब रिटायर होके बंदे ने कुछ ना कुछ तो करना होगा ना. तो मैं मजाक में ये कहता हूँ मेरा नेक्स्ट करियर ये होगा कि रिटायर करके जो है ना कम से कम एक्टिंग ही कर लूँगा. प्लस एक्चुअली आई एम रियलाइजिंग कि जो यंग लोग आते हैं उन पे कॉम्पिटिशन बहुत है. लेकिन इस एज में हर बंदा ढूंढ रहा है कि यार कोई एक्सपीरियंस 30 to 50 year old and or 50 to 60 70 year old, because now you can play all of those roles and you can have the diversity. And I think those people that have lived their life probably have more experience and more things they can draw on. Just आप कह रहे थे कि how do you prepare for a character? I mean, you can think of somebody in your life that has been that or done that, and you can kind of channel. More life experience gives you that credibility to draw from different times of your life. Because I mean, art and creativity is the way you look at the world.
And the longer you've looked at the world, the more vocabulary you have, the more you can, speak. Language भी इसी तरह से है. आप जितने आप ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें उतने फ्लुएंट हों. राइट? अगर आपकी लैंग्वेज में उतने वर्ड्स नहीं हैं, यू आर नॉट एज फ्लुएंट. हाँ, आप टेक्स्ट तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप जो है ना वो लीगल लेटर नहीं लिख सकते. To use an example. Absolutely. तो आपकी भी जो क्रिएटिव लैंग्वेज है उसमें आपके अब साहबजादे भी हैं. जी. तो अब जो बेटियाँ भी हैं माशाल्लाह. और तो अब जो मेरा सवाल है वो नई जनरेशन के हिसाब से जो हम बात कर भी रहे थे. सही. So Imran, as a father, you shared with me that your son is also interested and actually has been doing some filmmaking and creative work. So how do you, as a Pakistani American father, see him following this path in his early age? That's a philosophical question. Because you know the day what desi wala parent wala jata hai. He will watch this too. I know. Mashallah, he's got a job in corporate America and he's doing well. लेकिन उसको कीड़ा है to be creative. Actually, mashallah, all 4 of my kids are creative in their own right. He's now graduated. He's been working for a couple of years. और वो कह रहा है कि I'm going to quit corporate America and go do creative stuff full time. Being a creative person, I want to encourage it. And then being a desi father, you want to say, I want to say no. बेटी कौन देगा तुझे, घर चलाना है, दाल रोटी खानी है. So that's a balancing act. Lekin obviously, we also said about taking risks. So risk भी part of the process है. और अगर young उस पे आप risk नहीं लेते, तो फिर आगे जाके ज़्यादा limitations आ जाती हैं. So it is a philosophical question. It does depend के, how talented do you think he is? How much of a thing he can stand out. अगर आपको पता कि यार मैं सिर्फ उसको खुश करने के लिए कह रहा हूँ, कर लो, 2 साल ज़ाया करेगा फिर वापस आ जाएगा, तो चलो वो भी हो सकता है. लेकिन अगर वाकई if you believe he's talented and he can do something, then okay, maybe go do that. But you see, ये जो information age जिसको हम कहते हैं, what is information, right? Information is taking content and presenting it. Storytelling. So being a creative, you're always telling a story. Absolutely. So ये एक काफ़ी essential skill set भी वो बन गया. If you cannot tell a story, I don't think you can survive the next 40 years. It's all about content. What we are doing right here is telling a story. So I think अगर वो करता है and he can do well, I think it's a very good skill to have. You can learn accounting, you can learn engineering, you can learn all those technical things out of a book. Lekin the ability to communicate and connect with other human beings is very, very different. And if you can do it in a way that can actually earn you, amazing. I know you were trying to allude to this topic, तो मैं इसको touch कर देता हूँ, लेकिन I think a lot of our DC parents, especially Houston community, is very set in their ways, right? I mean, the paths are defined. The path is defined. Expectation is defined. There is no risk taking. There is no risk taking. Right? Absolutely. Because बाप आया था, बाप ने तुक्का लगा दिया, बिजनेस चल पड़ा. अब बेटे को उसी में लगाना है ताकि जो है ना वो तुक्का ना हिल जाए. बिल्कुल. So you're living out of fear, you're living out of concern, you're living out of not messing up. Right. और जब sports आप खेलते हैं, तो there's 2 ways to coach a sports team. One way is to win, and one way is not to lose. And when you play not to lose, you lose, right? So you have to take a risk, you have to expose yourself, you have to do something which is a little bit out of the ordinary. So I think as a community, as an American Pakistani community, जो यहाँ पे सारे जो आए हैं risk takers, सारे यहाँ पे immigrants हैं, सारे यहाँ पे entrepreneurs हैं, और entrepreneur की DNA जो होती है वो risk taking होती है. अमेरिका में जिसने भी innovative काम किया है, जिसने भी different काम किया है, वो चढ़ा है. So be a Pakistani American, take the risks, go do something different and break the mold. Well, with that, Imran, I can't think of a better way to end this beautiful podcast because तुमसे बात करते हुए वाकई टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया. So maybe there is a Imran Qamar 2.0 that we will have to do. So inshallah, I would love to do that. Maybe about architecture or something. Yeah, absolutely. We would love to do that. Wonderful. Thank you, Imran. Pleasure. Thank you. Assalamu alaikum.